अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिकेट क्लिनिक के साथ साइम, मुदस्सिर एंड आसिफ are here with you। कुछ अर्सा आपसे दूर रहे, अगेन वी रिकनेक्टिंग। पीएसएल आपने देखा, हल्की सी बात पीएसएल की करेंगे, और दूसरी जो मेन फोकस होगा इस एपिसोड में वो हमारे अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड। इन अ फ्यू मंथ्स वी आर गोना हैव द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन यूएसए एंड कनाडा। तो उसके अंदर हम आपके साथ अपनी अपनी टीम शेयर करेंगे, टॉप 15 पिक्स, एंड विल हैव अ डिस्कशन, अ डिबेट on which players should be there, which ones shouldn't be there। थोड़ी फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी करेंगे कि क्या मैट्रिक्स होने चाहिए, क्या पीएसएल की बेसिस के ऊपर हमें टीम सेलेक्ट करनी चाहिए या ओवरऑल देखना चाहिए। सो होपफुली आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आएगा। हाँ, एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, दो जो खबरें बैक टू बैक आई हैं और बड़ी, हम एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। पहले आपका इमाद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेना लग रहा है कि वो अब टीम में आ जाएगा, उसके बाद मोहम्मद आमिर का। तो क्या कहेंगे इन दोनों को, गिवन देयर रीसेंट फॉर्म? But I think the role Imad plays is, I mean, he's a very intelligent cricketer when it comes to chasing targets. He's very much like Shoaib Malik used to be. I think that he knows when to turn it on, when to just, take a backseat and let the other guys do it. He rotates the strike. You're not having many dot balls. So there's always something happening. You're not falling behind too much. He's very, very, street smart. हाँ, बहुत काम भी रहता है ना वो बिल्कुल। उसकी फीलिंग से हमें भी थोड़ी सी एज फैंस कामनेस आ जाती है कि भी ठीक है, बंदा ले जाएगा आगे वाली चीज ना। Yeah. वरना अगर आपका खुश दिल शाह और इस तरह आसिफ वाले लोग होते हैं तो हाँ, हमें वो होता है कि यार पता नहीं नेक्स्ट बॉल पे ही जाएंगे। अगले बॉल पे हमेशा आउट हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, right. वो वो ये है कि इमाद जो है ना, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि ही माइट नॉट बी द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन इवन इन 11, मगर somehow he has a niche के अब देखो ना, उस बेचारे की ज्यादती भी हुई। अब उसे कराची किंग्स का कैप्टन बनाया, ठीक है। ही वो पहले सीजन में ही वॉन पीएसएल, वही कराची किंग्स जो चलती नहीं थी। अगले सेकंड सीजन में वो आया तो कराची किंग्स ना अपने राउंड गेम्स में टॉप पे थी। इमाद वसीम को गिरता है, ऐसे सर पे चोट लगती है, तो ही मिस आउट द टूर्नामेंट और कराची किंग हार जाती है। तो उसके बाद वसीम अकरम टीवी पे कहता है कि इमाद को हटाओ, बाबर को कैप्टन बनाना चाहिए क्योंकि बाबर पाकिस्तानी टीम में कैप्टन। फिर वसीम अकरम अगले साल कहते हैं कि बाबर को तो कैप्टनसी नहीं आती, फिर उसको भी निकाल दिया। तो इमाद वसीम जैसे जो प्लेयर्स है ना, वो बेचारे मतलब अंडर यूटिलाइज हुए हैं 3-4 साल में। जब इसको नहीं खिला रहे थे तो he has the best economy in power play in the Well, whole world. he's a proven match winner, Yeah. right? My theme is always I want as many match winners in the 11 as you can have. Exactly. He's done it on the international level. Afghanistan के match में 2019 World Cup, we had no business winning that match, and he won it for us. So और इसका कंपटीशन नवाज के साथ बनता है ना, तो अब यार, नवाज की आप आप रिसेंट खुदा 2 सालों से परफॉर्मेंस देख लो तो नथिंग टू राइट होम अबाउट। अगर आप मुझसे पूछो, इसका कंपटीशन नवाज से कभी बनता ही नहीं था। नवाज ने का कोई रिकॉर्ड इसके, एक नवाज ने एक मैच अच्छा खेला है जो वो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ एशिया जो कप था। में 40 रन किए थे, वो भी बैट से, राइट। हाँ, उसका हफीज के साथ था, बनता था कि they did the same role. Hafiz is now like 40 plus. Let him go. He's done. So yeah. हाँ. इमाद के बारे में थोड़ी सी हमने बात कर ली, आमिर के बारे में क्या कहोगे आपके? मेरे नज़दीक तो ही इज एन ऑल फेज बॉलर, एंड हमारा पास था कि चलो नसीम हमारे पास है, शाहीन इज गुड इन द शुरू के ओवर्स में, बट डेथ में मार खा रहा है। वी वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड कि यार तीसरा बंदा कौन होगा। हारिस राव मार खाए जा रहा है, जमान का कुछ पता नहीं है। सो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ उससे। आप क्या कहोगे इसके बारे में? यार, आमिर का प्रॉब्लम ये था कि इमाद और आमिर जब साथ खेल रहे थे ना, दे वर द बेस्ट इन T20 in the power play, both of them. मतलब their economy was incredible. Even ODI में भी they were doing a good job. दोनों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कभी कभार ना ऐसा होता था दोनों विकेट नहीं लेते थे, इमाद भी और आमिर भी। मगर T20 में इफ यू स्कोर 150 और ऊपर से आपको इतना अच्छे अगर आपको दो बॉलर ऐसे हों जो 20-25 रन पे अपना कर दे, तो इट कैन बी अ मैच विनिंग डिफरेंस। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि रऊफ और शाहीन की जो परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डिप आया है पिछले साल कि दिस इज पैनिक मोड में चले गए हैं। जब पीक रऊफ, पीक शाहीन और पीक नसीम, यू कैड हैव मेड अ केस कि भाई आमिर ठीक है, दे वर बेटर देन आमिर एट दैट पॉइंट। आमिर गिव्स यू कंसिस्टेंसी। अभी भी अगर तुम पीएसएल देखो तो आमिर टॉप 10 में भी नहीं है पर विकेट्स। मगर ये या ही इज नॉट इन टॉप 10 अगर आप लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट किया ना उसने। एग्जैक्टली।
तो he's an अगर वो खुद नहीं विकेट ले रहा तो दूसरे बंदे हाँ, विकेट तो वही ना, he's a big batch player, he'll be consistent. तो I agree. यार अब तो बैटिंग भी अच्छी होगी उसकी उसकी आपने हाँ बैटिंग देखी है पिछले में उसमें वो हाँ, मगर I think I agree for this time just because कि शाहीन और हारिस रऊफ से तो बॉल ही नहीं हो रही, सिर्फ नसीम बचा हुआ है जो पिट नहीं रहा है, तो you need Amir to stabilize things. उसके अलावा तो Yeah, I disaster ही think चल रहा है ना. I also think Amir immediately gets into the playing 11 for T20s now, mainly on strength of his death bowling. You know, the change of the pace, the Yeah. Yorkers. That was our big thing. Wasim Wakar ke waqt mein Yorker, and we don't have anybody. Zaman threatened, flattered to deceive for a while, and then he's not doing it. कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी Bilkul, अरे Amir अरे is the आसिफ one भाई, who does that. डेथ बॉल क्या है यार, we are losing on both ends. वो ओपनिंग भी नहीं हो रही है बॉलिंग किसी से, हाँ सिर्फ ओपनिंग भी अच्छी कर रहा है आमिर it's a आमिर mess. ओपनिंग भी अच्छी कर रहा है हम पिटे ही जा रहे हैं. So that's going to be a tricky thing because if Shaheen is your captain, we'll talk about that later, and Shaheen still is now showing that he can take early wickets. I think Imad Wasim should be an opening bowler as well, and so where does Amir come in there? But at least in the death में तो कोई भी नहीं था ना, अब तो Yeah. अभी सिर्फ Amir. The Naseem one and thing I Amir would say at the about death. Amir, Naseem can do some death. Naseem and but the one thing I would say about Amir and Imad, but more Amir, is there has been some things have been said. Attitude is there a little bit. You have to make sure that if you bring them in, they're coming in for Pakistan first and foremost above everything else. One thing we have enjoyed in Pakistan cricket in the last few years is lack of division. There's been harmony within the team, and so you don't want to bring in any elements that could disrupt that. So you need to make sure if you come in, you're coming in for Pakistan. None of this crap where you fight and form different camps and things like that. They have to be fully on board. It sounds like they are. They're saying the right thing. अभी But that's अभी एक important. फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में हुआ है कि हाँ. आमिर एंड शाहीन प्लेड फॉर द सेम Yeah. फ्रेंचाइज हाँ. राइट ये तो Okay. एंड दे वर गिविंग इंटरव्यूज एंड ऑल आई थिंक फैंस थोड़ा ज्यादा हाइप अप करते हैं नहीं, इसको ये Yeah. मुझसे अगर आप पूछो, ये आप भूल गए हो. आमिर ने कहा था कि दे मेंटल टॉर्चर, ही वाज राइट. ये वकार यूनुस ने किया है. ये वकार जब से वकार यूनुस साहब ने शुरू किया था, सबको निकाल दिया जितने सीनियर है ना. तो भाई एक बंदा है, ही इज द टॉप परफॉर्मर इन द वर्ल्ड, आप उसको ड्रॉप कर दोगे तो वो तो पागल ही हो गया, फिर बकवास ही करेगा ना. आई थिंक आमिर इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्सनल प्लेयर्स. Yeah, बोर्ड की Mirza really hates Wasim and Waqar. So. board it was a board fault and board needs to fix it. I think they are professional. There is no problem. अच्छा दूसरे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना आप अगर आमिर और इमाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो बहुत सारा पैसा अपने फ्रेंचाइज से बना रहे हैं लीग क्रिकेट से हाँ. बना रहे हैं राइट उनको पता है लीग क्रिकेट आपकी टिल द वर्ल्ड कप तो कोई हो नहीं रही अभी आईपीएल हो रहा है उसके बाद हमारा एक दो सीरीज होंगी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा तो इट्स अ विन विन सिचुएशन हमारे पास भी विन है उनके पास भी कोई वो चीज नहीं है कि जी हमने ठीक है फिर हम आपको मना कर रहे हैं जिस तरह बाकी लड़कों को तो मना किया हुआ है ना आपने कि आप दो खेल सकते हो आउटसाइड पीएसएल तो आई डोंट थिंक वो मानेंगे आमिर और इमाद एट दिस स्टेज के यार हमारी जो इनकम लगी हुई है थ्रू ऑल दीज लीग्स बट एट दिस स्टेज इट्स अ विन विन सो आई एम एक्चुअली सीइंग इट टिल द वर्ल्ड कप अच्छा हो जाए यार होपफुली हम अच्छा परफॉर्म करें और उसके बाद फिर देखा जाएगा इफ दे वांट टू स्टे वैसे भी अल्टीमेटली तो उम्र हो ही रही है उनकी बट वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट जो है हमें सर्व कर जाए तो आई थिंक दैट्स गुड न्यूज़ I think it's a wild card entry for a short format and I'm fine with it. अगर आपको याद हो, हमने ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले सबने यही कहा था कि कुछ इमाद या आमिर खेल लें और वही वो पिट के वर्ल्ड कप ही हम पिटते ही गए ना, खत्म ही हो गया ओडीआई वर्ल्ड कप. तो आई थिंक इट्स चांस फॉर बोथ ऑफ देम फॉर सम रिडेम्पशन. चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो वो फिर रिटायर हो जाएंगे. सो के अच्छा ये थोड़ी देर में अपनी टीमों के बारे में आते हैं क्योंकि हम तीनों ने कुछ अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं लेकिन एक बंदा जो एक्चुअली तीन बंदे थे जिनकी बातें हो रही थी कि यार इनको अगर टीम में आ जाए दो तो अब आ गए हैं द थर्ड वन इज उस्मान खान राइट उसकी भी बड़ी बातें हुई हैं जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर पीएसएल के अंदर टू सेंचुरीज 196 लास्ट ईयर उसने फास्टेस्ट 100 बनाया तो उसके बारे में क्या डू यू थिंक कोई केस बनता है और अगर केस बनता है तो रियलिस्टिकली डू यू थिंक यू सी हिम कमिंग या मुश्किल लग रहा है कि वो चूंकि यूएई में 3 साल गुजार चुका है एंड ऑल आई मीन आई पर्सनली वुड लव टू हैव हिम इन मे बी नंबर 4 स्पॉट ओ भाई, बट आई डोंट नो आपके क्या व्यूज he is averaging 100 रन एवरेज 100 है. स्ट्राइक रेट उसका 169 है. क्लियरली ही इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन दिस पीएसएल. ठीक है, तो मेरिट पे तो उसकी जगह बनती है. प्रॉब्लम है, आर यू गोना गारंटी हिम नेक्स्ट 2-3 years एज अ कंफर्म. रिजवान को आप बिठाओगे
और कहोगे भाई ये तुम आज से हमारे विकेट कीपर हो, अगर वी कैन नॉट गारंटी हिम, तो गरीब आदमी यहाँ से खेलने दो यूएई, एटलीस्ट ही कैन गो टू आईपीएल और नहीं तो समवेयर। अगर आजम आता है तब भी तो रिजवान बैठता है ना, तो आई डोंट थिंक रिजवान नहीं, इज आजम अवर्स टू के सिटिंग साथ डाउन। अगर आजम के साथ होपफुली अब बिठाना चाहिए रिजवान को, जो नहीं करते थे ये। रिजवान भी खेल रहा था न्यूजीलैंड में और आजम भी खेल रहा था, विच इज दे डोंट नीड टू डू दैट, राइट? तो हाँ, अगर गारंटी दे सकते हो उस्मान खान को, तो मेरे ख्याल से बुलाओ, ना रहने दें उसको। Yeah, I mean, देखो, guarantee की बात, I see what you're saying, but how many matches did UAE play? I mean, even if he plays half-heartedly, kabhi kabar in Pakistan, this Pakistan setup, then it'll be more than what he plays in the UAE. My big difference with him compared to Amir and Imad is we've not seen him on an international level Yeah. or outside of these pitches even, and so what he's done is phenomenal, and it at least merits him being considered aage ke liye. But the thing is, you've not seen anything on an international level, so I'm not as eager to throw him right in there the way I am Amir and Imad Wasim. Yeah. Yeah. Go ahead. आप continue Well, I करो mean, so इसके look, बाद. it goes to the big philosophical question that I've been asking myself throughout this whole. Look, PSL was incredibly entertaining. It was really nice to see, a lot of fun. But the question I kept asking myself while watching all of this is, how much does PSL success translate into international success? Should it be the sole criteria for selection in the team? And you see, over the years, we've had some huge successes in PSL who have not done well internationally, whether it's Mohammad Nawaz, whether it's Pushdil, whether it's Haider Ali. On the flip side of that, you have someone like Babar, who had a great PSL. Had he failed in all of his matches, he still would be an automatic selection in the international team. So I don't think it should be the sole. Obviously, the flip side of that argument is that, say, domestic cricket is our criteria, is the basis for selection. I think the big thing about PSL to say is that you get to see these players for a sustained period of time. It's really nice to see them in different situations, in different scenarios. You're not defining a player by one performance, one innings, one bowling performance. So us lihaaz se, I love that we've had PSL be able to see it, but I don't think that we should be super excited to say he did well in PSL. Immediately, he's going to be an international sensation. That's not, for me. That's correct. But problem here is it does correlate. I take another. The correlation I see is talent. I Who have do a I see different. is a match winner who has abilities that are unique that no one else has, which is where I say an Azam Khan, for example. एक टूर्नामेंट की बेस पे तो कहीं पे भी कोई प्लेयर नहीं बनता, तो आप कोई भी टूर्नामेंट पे है तो एक इनिंग्स की बेसिस पे पीएसएल इज जस्ट एडिशनल टूल। तो अगर आप मुझसे पूछो, यू लुक एट ओवरऑल पिक्चर, आप डोमेस्टिक देख, मैं अभी एक मिसाल दूंगा बड़ी जरूरत लगी, एक मिसाल और देता हूँ मैं अभी। I know what you're talking about. डोमेस्टिक कैसे खेलते हो आप, फिर पीएसएल कैसे खेलते हो, फिर जब आप पीएसएल खेल रहे हो तो किसको छक्के मार रहे हो, किसको आप बोल्ड कर रहे हो, फील्डिंग किसको कर रहे हो, आपने बिग मैच में स्कोर किया या डेड रबड़ में रन कर दिए। तो पीएसएल इज एन एक्सीलेंट टूल, और मैंने एक दफा पहले आई वेंट थ्रू द लिस्ट, तो इट डज कोरिलेट विद सक्सेस। अब जैसे हैदर अली का आपने नाम लिया, हैदर अली और खुशदिल शाह और जो नवाज है ना, दे आर नॉट इवन इन टॉप 10 players in PSL. Not this year, but in the past they were. Even in the past, they were never top 10 players. I'm telling you, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वही टीम में 70-80% वही परफॉर्म करते हैं। हाँ, अगर मेरी थ्योरी ये, अगर कोई पीएसएल में ही नहीं बॉलिंग कर पा रहा अच्छी, he is gonna be a big disaster in international cricket, क्योंकि पीएसएल का स्टैंडर्ड, बैटिंग स्टैंडर्ड वैसे ही लो है। अगर वो यहाँ पीएसएल में पिट रहा है, तो वो तो इंटरनेशनल में पिटेगा ही पिटेगा। अगर पीएसएल में रन, अगर वो अच्छी बॉलिंग या बैटिंग कर रहा है, देयर इज नो गारंटी, मगर खराब परफॉर्मेंस गारंटी ही कैन नॉट परफॉर्म एट अ गुड। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इस पॉइंट भी जो आसिफ बात कर रहा है कि देयर आर प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, ऑफ कोर्स, जैसे इंडिया का आप देख लो विराट कोहली, अगर एक उनका आईपीएल बुरा जाता है या इसका एक पीएसएल जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं, ऑब्वियसली वो उन्होंने इतना स्टेटस एक अचीव कर लिया है कि वन टूर्नामेंट डज नॉट बेसिकली मीन एनीथिंग। बट देन देयर आर प्लेयर्स हु आर सॉर्ट ऑफ ऑन द बॉर्डर लाइन, राइट, ग्रे एरिया। उसके अंदर फिर पीएसएल इज अ गुड मेट्रिक ऑफ द करंट फॉर्म, द करंट एटीट्यूड, वो वाली चीज। और फिर अगर if a person is playing very well, he's in that gray area and he's done very well in PSL and you still don't play him, you have to reward him. हाँ, तो वो तो डीमोटिवेट हो जाता है ना यार, कि मैं अब और क्या करूं। जैसे एक मिसाल है न्याजी की, जो कराची किंग्स से खेल रहा था, क्या नाम है उसका पूरा नाम? इरफान न्याजी। इरफान न्याजी ने पहला डोमेस्टिक खेला इस साल, ओडीआई, वो जो वाइट बॉल होता है ना, लॉन्ग फॉर्मेट। आई थिंक ही इज एवरेजिंग 70 और 80 इन ओडीआई फॉर्मेट, वाइट बॉल, ठीक है। फिर से कहते हैं कि ही इज द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान, तो पीएसएल में उसको शादाब और वो
हाँ, arguably the best कराची fielders. किंग्स ना बहुत पीछे खिला रही थी 6-7वें पे, थोड़ा सा ऊपर कर सकते। खैर उसने एक मैच में बड़ा अच्छा मैच जिताया, पोलार्ड के साथ खड़ा हुआ 30-35 रन के। फिर एक मैच में ही कुडंट फिनिश, मगर टीम वाज अ डिजास्टर। तो प्लेयर्स लाइक दिस यू कैन सी फ्रॉम पीएसएल के यार ये डोमेस्टिक में भी रन कर रहा है, ये दे आर गुड एथलीट्स, दे आर फील्डिंग अमेजिंग एंड दे आर परफॉर्मिंग डिसेंटली। तो ऐसे प्लेयर्स को ना यू कैन put them in your top 20-25 and shortlist for a future actually. So PSL At least is जिस तरह के डेड रबर्स वाले में उनको एक्सपोजर दे सकते हो आप, के भी So इंटरनेशनल for में चल me, रहे नहीं चल रहे. I'm looking at the talent and skill level which is on display in PSL. You can see because some players stand out and they can be match winners. Because for T20s, my goal is fill the team with as many match winners as you can. And that's where PSL, I think, was a great display because you can see the cream rises to the top, right? And you can see some people have skills that others don't have. It's unfortunate, someone like Khwaja Jonafe, he has amazing skills. He did not take off. He did not do well aside from that one innings, but he's someone to keep an eye on for future. There are some players that you see. Abibi, this in the final, I think it was Azam Khan. There was a ball that was a bouncer that came to him. He moved away and adjusted it to the third man, right? My son, who watches some cricket, still does not believe that was an intentional shot. He says, there's no way it can be intentional. I'm telling you, this is the talent that this guy has. He plays cover drives and he adjusts his wrist at the point of impact. पे छक्का मारा था उसने, one of the cleanest hits. But not just that, when he'll adjust his wrist to send it to cover, extra cover based on the field placing. Nobody does that in Pakistan. So these are things that I think PSL is great for. Whether you score or not, scoring is important, but seeing the talent to be a match winner, that's where I think PSL is very important. और फील्डिंग टू, अगर आप 100%. शादाब ने जो फील्डिंग की है ना इस साल, मैं कहता हूँ कि 30-40 रन तो वो सिर्फ फील्डिंग से रोक रहा था यार। वो जो बाबर का कैच पकड़ा, बाबर का कैच रन किया उसने, मतलब इसी तरह नियाजी, शादाब, इवन साइम की जो डीप कैचिंग है ना, मेरा वो कैच नहीं छोड़ता भाई। वो जब वो पकड़ा करता था, मुझे होता था यार वो टेस्ट मैच में कैसे छूट गया, इतना जबरदस्त ये फील्डर है, टेस्ट मैच में कैसे छूट गया। पूछा किसी ने, कहता है मैं स्लिप में कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। So I also think PSL is great for बाथरूम जा रहा था, उसने कहा यार 2 बॉल पे खड़े हो जा, वो कैच आ गया। So I also think it's really strong for redemption, and it was the point I'm speaking specifically to is Osama, because we've all said Osama should never be in the setup again, but he worked with that. Now I'm going to sound like a chauvinist. I don't know the name of that coach, Jo Aurat hai. Look, he looked like a different bowler the entire PSL. And I think he's done well enough to actually warrant being considered for inclusion in the World Cup and around that. That's the nice thing to see, that you have a young guy who does well domestically, fails internationally. He could have gone, put his head down and been sad the whole time. Instead, he said, what can I do to get better? He got a coach, he improved his game, and he looked much better. PSL, if there's no PSL, he wouldn't have had that opportunity. Achha, on that point, there's another thing he said which helped him come back. कहता है मैंने वो डेविड बेकहम की डॉक्यूमेंट्री सुनी है। डेविड बेकहम की there's a documentary कि जिस तरह उस पे बैड पैच आया था, तो फिर I mean, but that speaks to the individual. That speaks to the individual. He has that much character to dig down deep and say, I know I'm better than this. Let me show the world. And he did it, मगर मसला वही हुआ ना बेचारा उसामा के साथ कि शादाब अब 3D से 4D हो गया। वो उसने इतनी जबरदस्त उसने फील्डिंग की, बैटिंग की। शादाब की गुगली मैंने पता नहीं 2-3 साल बाद तो मैं शादाब की गुगली देखी यार। फुल टॉस ने एक कम कराई, फिर कैप्टन भी हो गया, तो वो 4D हो गया। फिर ऊपर से अब्रार आपके पास है, जो अब्रार इज बॉलिंग सो वेल। अब्रार ने टफ ओवर किए हैं। जो सबसे बड़ा फर्क है ना अब्रार में और उसामा में, जैसे फाइनल में अब वो गलती जो थी आपकी उसकी थी, क्या नाम है, रिजवान की, कि वो उसामा को 10 ओवर बाद लाया जब गेम खत्म हो गया था। उसामा शुड हैव कम वे अर्लियर, ही कुड हैव टेकन 2-3 विकेट्स। तो अब्रार जो कर रहा है ना, टफ ओवर्स कर रहा है पावर प्ले और डेथ में, तो अब्रार is in competition too. तो उसामा improved, but Shadab and Abrar have both improved too. So that's the problem. अच्छा, थोड़ा सा ट्रांजिशन अब कर लेते हैं कि in the interest of time कि भाई अपनी अपनी टीम्स जो हैं टॉप 15 आ रही है स्क्रीन के ऊपर। You guys are seeing it? Yes. अच्छा, ठीक है, गुड। So basically I think यहाँ तक बात है कि टॉप 11 और रिजर्व्स, उसमें ज्यादा वो चीज नहीं है। I think all three of us, at least I'm flexible. I'm not hung up. I think the first thing to establish, though, is that all three of us are saying Simon Babar have to open, and the PCB have to get this to their heads.
No matter Yes. what, Simon Babur have got to open. This has been a great combination. They have to और stick जो with it. बयान आ रहा है रिजवान का, आई थिंक ही आल्सो हैज सीन द राइटिंग ऑन द वॉल। अभी वो जो हाँ, चीज है ना कि जी मैं ठीक हूँ जी, मैं नीचे भी खेल सकता हूँ, वो हाँ, चीज। और फिर बाबर भी बयान दे रहा है कि भाई मुझे तो जबरदस्ती एक तरीके से मैंने एक सैक्रिफाइस दी थी अपनी, मैं करना नहीं चाह रहा था न्यूजीलैंड टूर हाँ, में। सो आई हाँ, थिंक एंड प्लस यार मैं तो उस साल भी कह रहा था, लास्ट ईयर भी जब ये कर रहे थे पेशावर जलमे के लिए, यार इतना अच्छा कर रहे हैं, उस वक्त बाबर हाँ, कैप्टन था, ही कुड हैव पुट हिज फुट डाउन, लेकिन उस वक्त खैर हाँ। जो जो भी है। तो एनीवे दिस इज अ मैं उस दिन मजाक में कह रहा था कि ओपनर जलमी के और बाकी सारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो यूनाइटेड का, इसको हाँ। कंबाइन तो टीम बन जाती है। तो वही बन रही है, ऑलमोस्ट वही चीज एक बन रही है कि आप चाचे को जरा लाओगे, वो उसको तो नहीं हाँ, आप छोड़ सकते। बट तो शुड वी टॉक अबाउट के जो चार लोग हैं या चार पांच लोग हैं जिसके अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बन जाती है, और डू यू वांट हाउ डू यू वांट टेक दिस? सो फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड में मार्क किए हैं, रेड में वो हैं प्लेयर्स जो यूनानिमसली नहीं हमने सिलेक्ट किए। देखो हम्म क्या सो मेरे लेट्स टॉक अबाउट फखर फॉर एग्जांपल, राइट? सो ही इज नॉट इन मिर्जाज लिस्ट। देखो उसका उसका रीजन है, मैं बताता हूँ। चलो, मैं ये जो लिस्ट मैंने जो निकाली है ना, हम्म मेरे ख्याल से जो जो पीएसएल अभी हुआ था ना, हम्म दैट वाज नॉट फॉर रिजवान और इवन बाबर और फखर। वी ऑल नो व्हाट दे कैन ऑफर और व्हाट दे डू, ठीक है ना। हम्म तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि क्योंकि टीम हमारी नहीं बन रही, नहीं पर मिडिल ऑर्डर उड़ा हुआ है, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है हमारा। तो मुझे ये देखना था नया बंदे कौन, हु आर द मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। और जो क्योंकि जो हमारा जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है वो बी टीम आ रही है, तो हम्म मेरी प्रायोरिटी ये है कि नए लोगों को मौका मिले इमीडिएटली। क्योंकि पुराने वी ऑल नो के हु इज स्टैंडिंग वेयर, और उसमें थोड़ी पॉलिटिक्स भी चल रही है अनफॉर्चुनेटली। वो खैर उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि पांच छह लोगों गैंग है, एवरीबॉडी नोज। तो मैंने जो लिस्ट जो पिक की है, इसमें मेन चीज ये रखी है कि इमीडिएटली आई थिंक दीज players needs to start right away so we can figure out the best combination सो before the World आप Cup. न्यूजीलैंड टूर के ऊपर ज्यादा बात करें, यू आर स्टिल Next मेकिंग tour, अ केस के हो हाँ सकता है फखर, बट द थिंग इज इफ यू डोंट प्ले फखर तो उसकी लास्ट अभी फॉर्म तो yeah. बुरी है, फिर हाउ डू यू बेसिकली गिव हिम अ चांस टू कम बैक देन, यार, राइट? चलो अगर आप मेरी टीम पे बात करो तो हम्म मुझे बताओ कि हाउ यू गोना डिसएग्री। साइम वो बाबर, तो वी हैव टू ट्राई, राइट, ठीक है। हम्म फिर आप आते हो आगा को मैंने इसलिए डाला है कि ही ब्रिंग्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जो yes. हमने पीएसएल में देखा है कि ही लुक्स लाइक अ वन डाउन और टू डाउन प्लेयर। आगा का कंपटीशन है अब्दुल्ला शफीक से। प्रॉब्लम राइट। ये है कि आगा इज अ बेटर फील्डर एंड अ बेटर बॉलर। आगा आगा एक्चुअली हम तीनों की लिस्ट में है, सो आई हाँ, थिंक उस पर ज्यादा Yeah, but डिबेट नहीं है। he's in your नहीं नहीं, reserve. Sam, अगर he's not in your आप 11. या आई एम या टॉकिंग अबाउट, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट हंग अप, अगर फखर Okay. नहीं चला तो मैं आगा को डाल दूंगा। आई एम जस्ट एक फ्लोटिंग Okay. है एक तरह से, एक दो Okay. मैचेस उनको देख लो, फखर नहीं चला तो आगा को डाल दो, मेरा वो वाला अप्रोच है। आई एम नॉट हंग अप कि यही 11 Mera, खिलाने हैं Mera in my mind, Aha is an automatic selection through to the World Cup. I think he has shown over the years and in PSL as well that he has the ability, like Mudassar said, multifaceted player, या bowler, batsman, excellent fielder. I don't think I've ever seen him drop a catch. And he can turn it on. And not only that, he can be simple, straightforward one down. He can do reverse sweep. He can use the 360 field. He knows, sort of like Imad Wasim, he knows when to turn it on and when to turn it off. For me, he's an automatic in the 11 no matter what. Mera jo Fakhr ka hai, the questionable, if it's not Fakhr, it'll be Rizwan. Because I want, like I was talking about, an anchor. I think Rizwan would be a good anchor to have, not necessarily one down, put him up and down based on the situation. Maybe he doesn't even get a chance. Or if you've lost 5, 6 quick wickets, put Rizwan in to stabilize a little bit. But Agha for me is automatic. अच्छा, आई एम एग्जैक्टली सरप्राइज कि रिजवान आप दोनों की रिजर्व्स में है, यार। व्हिच मींस दैट यू थिंक दैट दे आर नॉट गोना प्ले हिम गिवन हिज क्लाउट, जो क्लाउट है उसका, यू थिंक दे आर गोना ड्रॉप हिम फ्रॉम द प्लेइंग यार 11? वो सब वो No. शुरू से ही गलत बना है ना, क्लाउड भी गलत है, सिलेक्ट हर। यू डोंट नीड टू एंकर बाबर के होते। मैं तो कब से कहता हूँ कि बाबर रिजवान कैन नॉट प्ले टुगेदर। इवन बाबर भी लायबिलिटी बन सकता है इफ ही डजंट स्कोर, तो नोबडी हैज गारंटीड स्पॉट। तो रिजवान की जगह नहीं बन रही, या तो बाबर को खिलाओ या रिजवान को खिलाओ। तो और अभी तो इसमें ग्रेप वाइन आ रही है, शायद उसको कप्तान ही बना दें आप, Huh. कि हो सकता शाहीन That's the tricky thing. Yeah. है इसको, रिजवान को। रिजवान Rizwan. को। और Rizwan. ये रिजवान का मुझे लगता है आर्या पार होने वाला है, या तो कैप्टन बनेगा या ये नई एडमिट से निकाल देगी। आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि अगर तो आपके कप्तान पास बन गया तो फिर तो रिजर्व को तो भूल जाओ ना आप, फिर तो अगर मेरी लिस्ट ही कप्तान चलेगी। अगर कप्तान बना तो फिर इमाद और आमिर को भी वो निकाल देगा, रिजवान नहीं नहीं, खेलने देगा। वो उनको तो अश्योरेंसेस पीसीबी ने, वो तो मोहसिन नकवी ने उसको अश्योरेंसेस दी है ना, वो तो रिजवान तो नहीं निकाल सकता। अगर उनको तो जब मीटिंग हुई होगी उन्होंने You know, अश्योरेंसेस दी होंगी, वो भी इतने yeah. इडियट्स तो नहीं है।
in my mind, Dekho, Babar is no longer playing as an anchor, right? He did that in the previous years. He's now playing as an aggressive opener, just playing more correct shots. He's not lifting it as much. So in that sense, it does leave room for an anchor to come in. In my mind, Dekho, everybody knows how much I love Fakhr, but he's looked really out of sorts. Fakhr, in my mind, is on very, very, very thin ice, you know? And I think, look, we know Fakhr does not have technique. It's all hand-eye coordination. And when you lose that, you lose it. And so with his age being what it is, it may be time for him to call it a day and say, I'm done. You know, I'm willing to give him a chance because of his international track record. But if he doesn't perform in the next few, T20s against New Zealand, I would put Rizwan in because Rizwan does have much more to him. He can be an anchor, he can be an accelerator, and he doesn't have to come at number 3 because फिर वो वही बात है कि बाबर और Rizwan साफ होंगे, but put Rizwan lower down if you need to. Let him be a floater. नहीं आ रहा कि आप रिजवान को कहाँ खिलाओगे. मेरी टीम देखो, ठीक है, अगर साइम बाबर ओपन करते हैं तो जितने प्लेयर्स के नाम तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो तुम रिजवान को कहाँ किसकी जगह खिलाओगे? अच्छा, तो तुम्हारे, so if you look at yours, right, and Saim Babar don't take off, you suddenly you find that you're 60 for 5, right? Just chance, you know. That's going to happen. I have Imad Wasim on at number 7 or 8. So that for me, that's where Rizwan would come in very handy. What he's going to do at that number? He will, he'll stabilize the innings, and so it's a difference between getting all out for 120 and all out for 150. That's what I think. अच्छा, how about अब जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ ना, मेरा ये है कि अगर आपका बाबर आउट होता है तो रिजवान आ जाए, अगर आपका साइम आउट हो जाए तो फखर आ जाए. यू आर मेकिंग अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, कि अगर एक एंड पे आप कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करो, एक एंड पे आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी दो. ठीक है, अगर मैं, क्योंकि मेरे सामने मेरी टीम है, मेरा नहीं ख्याल इसके जो आगा या आजम इफ्तिखार, इनमें से कोई भी, किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी नंबर पे आने में, तो दैट्स द की. यू नीड टू team na, you don't go with stats. So no, it's not. So I actually think what Simon was saying is what I used to think as well. The only issue I have is Rizwan in the power play does not take advantage of the field restrictions. And so I think Rizwan is taking up someone else's spot in the power play. Even if Simon is still there, I just think Rizwan is better lower down. But I think uski jagah banti hai in case you have a collapse. He's your insurance policy, I think. And he may not get a chance at all. He should be there, I think, if Fakhr is totally out of sorts. But I see what you guys are saying. बल्कि 15 में भी मैंने ना उसको ऐसी डाल लिया क्योंकि पब्लिक प्रेशर की वजह से. Public pressure. वरना तो मेरा तो T20 में उसकी जगह ही नहीं खत्म हो गई यार. तो आपके पास 4 कीपर आ गए हैं. आजम, ये आपका फिर ये उस्मान खान तो नहीं आ रहा, मगर अभी हसीब ने रन नहीं किया, उसको चांस भी ठीक नहीं मिला है. हारिस है, तो आपके पास 4 कीपर आ चुके हैं. मुझे नहीं पता आप रिजवान को कैसे सेट करोगे अब T20 में. चलो वो अभी पता चल जाएगा जब कैप्टनसी के डिसीजन से भी, क्योंकि अगर तो वो वापस आ गया तो ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग. तो we'll talk about that a bit, है ना, कैप्टनसी का. अच्छा, चले नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट जो है शादाब. सो शादाब मेरे और मुदस्सिर की है लिस्ट में, बट आसिफ आपके में नहीं है. आप बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो, क्यों शादाब is the man of the tournament. You guys have complimented him so much. He's the man of the tournament of PSL. Here's my thing. Look, he's a great fielder. He's a positive guy, good energy. Batting, we've seen he can bat when he needs to. That's all great. The last few international matches we've had, I think the biggest glaring problem we've had is lack of a world-class spinner, a wicket-taking world-class spinner, right? Shadab used to be that. And I think, so what I've done is I've looked at his last 20 international T20s. I have taken out matches against Afghanistan and the Netherlands, okay? Because those are, so we're dating back to last 18 months. So September of 2022. So you have matches against England, Bangladesh, New Zealand, India ke saath ek match hai shayad, Zimbabwe and South Africa. 20 matches. Sorry, ODIs dekh rahe ho ya? No, T20s. T20. Only T20s, okay. Only T20s, all right? And I've done this all math in my, calculator, so whatever, it may be wrong, but, so in those 20 matches, economy rate of 7.54, not bad. His career economy rate is 7.07, so not as good, but still, he's taken 17 wickets, right? So he's not a wicket-taking bowler. Even agar aap dekho, when's the last time he actually bamboozled a batsman? They can read his googly, they know what's coming. He's not getting many wickets bowled or LBW. Most of the wickets he's getting, even in PSL, are people trying to accelerate and getting caught on the boundary. I want a bowler like a Rashid Khan. We don't have Rashid Khan, but someone who actually is, batsmen cannot figure out.
I would submit even Saim Ayub was confusing batsmen more than Shadab was. You want your number one spinning option to be a wicket-taking, aggressive guy who batsmen cannot figure out. And sad to say, in my mind, Shadab has not been that for about the last 6 months, but looking at this last 18 months, I love Shadab. He's a good guy, but he's not what we need. If we want an aggressive wicket-taking bowler, he doesn't make the cut. I would, Iftihar, in our own team, I would take Iftihar or Sain, Imad, Wasim. I mean, Shadab's barely the fourth best spinner in this 11. How can he be your frontline spinner? Abrar, in my mind, far fits the bill better than. But जो overall utility वो लाता है fielding से आपका batting के अंदर but आपका spinner must be a spinner first and foremost. You know, he's a great fielder. Bring him as a sub. Bring him as a sub fielder. You know. No, I think Ashraf bhai, you're right. मगर एक प्रॉब्लम ये हुआ था बीच में. I think उसका T20 का overall impact इतना बुरा नहीं था. ODI में ये और नवाज was like a headache. Like No. Yeah, but that's why I've restricted my search just to. I'm surprised. I was expecting maybe T20 में अगर कोई स्पिनर 6-7 से. अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ अभी. तो शादाब का look like he's getting more wickets in this PSL. Like ठीक है, अगर if he's not taking wickets. So how many bold and LBWs were there? No. But how many were caught on the boundary, right? Yeah, but we saw. वो तो part of T20 होता है ना. What I'm saying is batsmen can read him. No. Our own PSL batsman can read him. He was not even bowling. He was bowling nonsense. World Cup में he was bowling full toss. There was no googly. So there is a big improvement from the World Cup. What I agree with you, अगर ये improve नहीं कर रहा bowling में, तो he can be dropped 100%. मसला ये हुआ है कि. So do you think he's bowling better than Abrar in T20s? No, not Abrar is the best, I think. Okay. Right? Abrar so your number one front line attack spin bowler should be your best. And to me, there's no room for Abrar and Shadab there. I think you have a valid argument. फिर हमारी बैटिंग थोड़ी वीक नहीं हो जाती अगर हम अब्रार को डाल देते हैं let's say. Batting that's fine, but you know, your bowler, you have to have a world-class spin bowler. You have to. This is Pakistan. How can we not? And that we saw in the last few matches international, it was a huge glaring hole in our lineup. Everyone was talking worldwide. Why doesn't Pakistan have a world-class spin? But देखो ना, इससे अब keep in Caribbean pitches in mind, ठीक है? आपको पता है इमाद has improved. उसके जब पहले इमाद का भी criticism ये था इमाद के ऊपर भी कि उसे रन रोकता है, पावर प्ले में आउट नहीं करता था. अब he has developed, you know, अब वो फ्लाइट करके he is a big off spin. तो वो विकेट इमाद actually has improved. तो आपके पास शादाब जो है ना एज अ ऑलराउंडर टीम में डाला था क्योंकि करेबियन कंडीशन. जो एस आपके जो मेन स्पिनर है ना वो अब्रार. जब भी मैं जैसे मेरी टीम में तो मैं रखा हुआ है अब्रार को. तो आई थिंक अब्रार हैज टू प्ले एंड इम्प्रूव. इमाद कैन आल्सो मेक टू द टीम बिकॉज ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग बोर्ड. और शादाब जस्ट गिव यू एज एन ऑलराउंडर. So yeah, for me, from a bowling standpoint, I would prefer Saim. I would prefer Agha Salman, Iftihar, and Abrar over Shadab as an attacking bowler to get me a wicket. In a crunch time, when I want a wicket, I'll choose those guys over Shadab. So how does he deserve a place in the team? I just don't. You have a good argument. Agha Salman bowls better than most spinners in Pakistan. Yeah, Chacha ko dekho. Chacha is restrictive. He gets wickets. You have all these part-time guys who are bowling better than your supposed front-line spin bowler. I mean, that is a deal breaker for me. You know. It's a valid argument. You know what? आप सबको बिठा सकते हो. आपको मैं साइम, चाचा और इन लोगों से मैं स्पिन ओवर करा लूंगा. एक स्पिनर अब्रार खिला लो, and then you can add another pacer. I mean, that's I guess about this. What you can say, since you guys, I mean, look, clearly Shadab has a lot for going for him. Then maybe try him out in the New Zealand matches. But he would be like Fakhr on very, very thin ice. If you don't get it done, you're out. You know, keep him in other formats, but he's just not been penetrative in T20 cricket international. तो बात फिर वही आ जाती है कि how much does PSL count? Because you give him the man of the tournament like a week ago, and then you say you're on thin ice. I would not have given him the man of the tournament. I'm not thrilled with his you know, the way he promoted himself ahead of valid batsmen in cap. You know, that was batting तो उसके वाकई वो बनती नहीं है जगह. Batting तो low down ही आएगा. I mean, अगर इमाद ने एक परफॉर्मेंस और दी होती तो he could have been a better man of the. अभी भी दे सकते थे यार. ज्यादा इम्पैक्ट इमाद ने वैसे ज्यादा क्रिएट किया. जो क्रंच गेम्स थी
उसके इमाद United, deserve to be. I mean, United I तो don't बाहर हो गए। enjoy dropping Shadab. I like him, but I just see a complete lack of penetration when it comes to taking wickets in T20 internationals, and the statistics bear it out. या So, you know, मगर अच्छा, आसिफ जमाल के ये बारे में बात कर लेते हैं, टाइम का भी थोड़ा सा हुआ है। एक चीज और हाँ, शादाब बोले। की एक चीज और है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ना हम सब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं शादाब को somehow at least in T20 tournaments ना शादाब has performed really well in big games ये 2 साल पहले हमने ये बात की थी, and then he हाँ, didn't perform in you the know, subsequent tournament. That's the problem. in the World Cup, no, T20 में he's performing like against T20 में की थी उसने, अभी ओडीआई में नहीं की। T20 हाँ में तो उसने ODI साउथ अफ्रीका की गेम जिताई थी हमें, साउथ हाँ अफ्रीका वाली गेम। exactly T20 में he has been performing well in big games against India यार to survive as a spinner against India is a big deal. So Yeah. शादाब पता नहीं किस तरह बच जाते हैं इंडिया से हर दफा T20 एशिया कप जो हुआ था T20 या वर्ल्ड कप में मगर I think it's a valid argument. Sarfraz, we Shadab pe we needs a microscope I on mean, it. let's hope he's. I mean, look, I know he'll be selected. Let's hope he succeeds. Yeah. I just think he's the. If you're the 5th best spinner in your 11, then you shouldn't be the frontline spinner. Yeah. Oh, ye kya hua? I think he's Sai Mahara hai mere khayal se. Look, I've upset him so much about Shadab that he walked out. You know? वो थोड़े धूप पड़ी थी। हाँ। अच्छा यार, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम न्याजी की बात कर लेते हैं या जमाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो और हैं जो सबकी टीम्स में नहीं है। चलो मैं जमाल इज इन माइन एंड जल्दी से बता दो मैंने न्याजी क्यों डाला है न्याजी मैंने इसलिए डाला था कि आई एम नॉट अ फैन कि मिडिल ऑर्डर के किसी को मुंह उठा के कोई ओपनर आ जाए अब्दुल वो फरहान ओपनर खेलता है उसको न्यूजीलैंड में छठे में भेज दो आई रियली वांटेड द पीपल हु आर प्लेइंग ऑन देयर स्पॉट्स इन पीएसएल तो पूरे पाकिस्तान में ना जो इंसानों वाली जो मिडिल ऑर्डर है वो सिर्फ आपको आजम खान का नजर आएगा इफ्तिखार कुछ जबरदस्ती लोअर मिडिल चाचा अपने माइंड में ना बहुत वो बड़े प्लेयर है सेकंड डाउन उनको हमने जबरदस्ती तो न्याजी जो है ही इज लुकिंग गुड एट नंबर 6-7 ही हैड अ फैंटास्टिक डोमेस्टिक सीजन वो जो एवरेज उसकी 70-80 चल रही है गन फील्डर है तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कंपटीशन है मिडिल ऑर्डर में तो मैंने इसलिए रखा है अगर आप प्लेइंग 11 में यू कैन ट्राई हिम नहीं खिलाना तो आई थिंक वी शुड स्टिल कीप हिम इन टॉप 15-20 just because of his overall he's a good athlete. What team did he play for? Abhi PSL man. Who did he play for in PSL? कराची किंग्स ना। Karachi Kings. Yeah, I barely remember him. I'll be honest. I can't really give you an honest opinion. I thought he was कराची किंग्स में पॉलार्ड forgettable. वगैरह के साथ अच्छी थी पार्टनरशिप, he ही had इज अ गुड फील्डर। he had a Yeah. good I mean, excellent maybe his time will come. Like बट Ajay ये now. मुदस्सिर आपके उसके अंदर फिर ये है कि आजम, यू थिंक नंबर 4 पे इजंट इट अ बिट टू हाई फॉर हिम? I नहीं think so. तो इसमें ये कर सकते हैं कि आप इफ्तिखार को एक सेकंड हाँ आजम नंबर 4 पे खेल सकता है 4-5 पे 5 पे तो सही है। टॉप पे उसकी थोड़ी सी स्लॉगर है बेसिकली, तो उतना बहुत जल्दी अगर आप उसको हाँ. एक्सपोज कर दो। Azam should not come before the 10th over. एग्जैक्टली। हाँ 10 वेल प्लस सेड। स्वीट स्पॉट है तो ये थोड़ा है प्रॉब्लम 4 डाउन का इस लाइनअप में कि कोई स्टैब्लिश नहीं है इफ्तिखार ने वर्ल्ड कप में किया था ही वाज डिसेंट अब नियाज इज बैटिंग सो लो मगर सुना है कि ओडीआई में ही बैट्स अप तो या मगर ये अच्छा, कि जमाल को मैं बता देता हूँ मैंने क्यों रखा है। आसिफ आप बता दो, मुदस्सिर आपने नहीं रखा तो यू कैन जस्टिफाई। मेरे पॉइंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास अभी हमारे जो 11 के अंदर वी आर जस्ट प्लेइंग 3 पेसर्स, राइट। हम तीनों की उसके अंदर, तो डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशंस अगर हमें एक फोर्थ पेसर की जरूरत हो तो देन आई वांट अ फोर्थ पेसर हु इज काइंड ऑफ हु कैन बैट एज वेल। So for me, it was a choice between Jamal and Wasim Jr. Wasim Jr. frankly hasn't impressed me enough, especially डेथ में तो वो फिर भी अच्छी decent करा लेता है, मिडिल ओवर्स और जल्दी जो है वो काफी मार खा रहा है। But And I batting think will be Jamal is fast. head and shoulders above Wasim Jr. as far as his batting technique। वो हमने टेस्ट मैच में भी देख लिया था, इस पीएसएल में भी देख लिया था, तो बैटिंग में Jamal is much better than Wasim Jr. बॉलिंग में दोनों को इतने दोनों have their flaws, it's a pick between these two। I'm going with Jamal। My opinion is 100% exactly what you said. Yeah, and Jamal has the potential. Look, he has bad days as well. He reminds me a lot of Wahab Riaz. When he's bad, he's terrible. When he's good, he's a match winner. And for me, like I said, it's putting as many match winners as you can in the middle of the field. And so, yeah, 100%. मैंने अभी जमाल को इसलिए नहीं डाला क्योंकि जमाल था एक्चुअली
मगर बिकॉज वो आमिर अनाउंस किया तो आई हैव टू पुट आमिर इन 15. मैंने वसीम जूनियर को इसलिए पिक किया कि एटलीस्ट ही कैन बोल सम एट डेथ. असल में कैरेबियन में ना वी आर नॉट गोना नीड फोर्थ पेसर. तो इतनी ये सिर्फ बेसिकली इंजरी रिप्लेसमेंट के लिए है लोग. हमें वी गोना नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर, नॉट एन एक्स्ट्रा पेसर. Actually, मेरे उसमें तो I would इसलिए pick with. हाँ, go ahead. या तो जमाल मैंने इसलिए, और वो ही इज बॉलिंग सो बैड, आई डोंट थिंक ही डिजर्व टू प्ले T20 राइट नाउ अनलेस ही इंप्रूव्स. तो जमाल को मैं तो नहीं बॉल दे सकता अभी से, तो इसलिए मैंने बट यू हैव वसीम जूनियर भी तो कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा. वसीम जूनियर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फॉर द डेथ. वो शाइन लोगों से बेहतर 17-16 करा सकता है. मगर बट अब तो आ अगेन गया ना, आमिर आ गया हमारे पास डेथ अब के लिए. आमिर आ गया तो ये तो है जूनियर ना. का भी वैसे, हाँ Yeah. जूनियर का भी अब So I had Wasim Jr. in there because I did not know Amir was available. Now that I do that, I would have taken Wasim Jr. out of my reserves and put Haris Rauf in there as a reserve. So then yours becomes very similar to mine then. मेरे पास भी रऊफ है. बस वो शादाब का मसला है. रऊफ मेरे पास भी है भाई. हाँ, रऊफ उस पे नहीं था, आसिफ के पास नहीं था. हाँ, now तो I have him. अगर रऊफ आ जाता है तो then रऊफ becomes unanimous as well then. Yes, yeah. Okay. So then the other point of debate then is Usama, because Usama is only in Asif's. I think कुछ तो आपने बात कर ली है. I think Osama and Abrar are interchangeable. This is based on the premise that there's no Shadab. Again, highly unlikely, but you know. अब उसामा का ये है कि अब numbers देखो तो yes, he is the highest wicket taking bowler in PSL. लेकिन अगर आप उसका impact देखो, अगर उसकी economy देखो, और जो क्रंच के गेम से जितनी उसने मार खाई है, अभी फाइनल के अंदर देखो उसने, तो वो मैच बन गया था, यानी उसने गप्टिल ने उसको बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया. तो आई डोंट हैव टू मच ट्रस्ट इन उसामा, मसला ये है. Look, Osama has broken my trust before as well. मेरे पास सॉल्यूशन है. वो आसिफ भाई को शदाब नहीं पसंद, साइम को उसामा, तो अबरार विंस द नहीं, अबरार तो हम तीनों ने रखा हुआ है. तो अबरार पे कंसेंसस आ गया ना, तो अबरार इज, चलो पिक कर लो. अबरार तो है तीनों की टीम में. Hey, I don't think one performance should be career defining. Bichara, just like Salim Jaffer in the '87 World Cup, his whole career was demolished because of that. Guptill is a world-class opening batsman, and he hit Osama, and he did it well. But Osama, again, in my mind, just watching the overs, watching the dot balls, watching how batsmen didn't know what was going on, I just think the improvement, like you said before, the improvement that he has shown should be rewarded. Look, if you ask me, take that coach, Jo Bandi hai, let her coach Shadab. And maybe he'll learn how to become a wicket-taking bowler again. Because for me, it's the way you took the wickets. And Osama, you're right, economy, all that stuff that's there. But he had batsmen confused. He had them not knowing what was coming. They couldn't read his googly. They couldn't read his flipper. It looked like the batsmen were struggling. And with Shadab, I just don't see that. I don't see that at all. You know, so it's more the eyeball test. It's not scientific. Like, although with Shadab the numbers do bear it out. I just think Osama, the leap of improvement I've seen in Osama from when he was playing Afghanistan last year to what he was doing now is huge, and I think that should be rewarded. लाइन तो काफी बेहतर हुई है उसकी, but I think consistency नहीं है उसकी, और वो क्रंच गेम्स के अंदर इकोनॉमी जो है वो. And look, a lot he dropped of his the catch that made me want to strangle him in the World Cup. We all know, you know, I mean, he's got a lot of liability. और उसके बाद बड़े अच्छे कैचेस पकड़े हैं उसने, but वो स्टिक करेगा मेमोरी में जो कैच छोड़ा उसने. I think a lot of his wickets this season as well, कुछ तो जाहिर है उसकी बड़ी अच्छी बॉल्स भी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी कि बिकॉज T20 है, बैट्समैन ने मारना है, maybe वो आउट हो गए आपके हिट करते. I felt batsmen were more uncomfortable against him than they were against Shadab, just in how they were approaching. That's my thought. बट आउट ऑफ इन दो के अलावा अबरार जो है वो इन तीनों से मैं बेहतर रेट करूंगा, इन द सेंस कि वो इकोनॉमी भी देता है आपको. Yeah, Abrar is number one. And the good thing, you know, we were all upset Shroom in the last like year or so that he was injured because we weren't getting a chance to see him. I think that has been a blessing in disguise in that the world has not seen him yet. They don't know what to expect when they see Abrar. So he will be a real trump card when it comes to the World Cup. You know? यार अबरार के साथ वही हैंड हुआ है कि हमने नवाज और शादाब को इतना प्रोलॉन्ग किया है कि अल्लाह की पनाह. यार तुम कैन यू इमेजिन, तुम अभी भी शादाब को प्रोलॉन्ग कर रहे हो? नहीं मैं टेस्ट मैच में आप Thank you, you've made my argument. आप नवाज को भेज रहे हो यार टेस्ट मैच में. तो अबरार मुझे इसलिए पसंद है कि he should have gone more, like given more chances by now, ताकि पता तो करें, मतलब वो look like he can be like a 3 format solid spinner. मगर अभी भी ना
आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरह उसको चांस दिए गए हैं। वर्ल्ड कप में नहीं खेला ना, ओडीआई वर्ल्ड कप में ही वो सिटिंग आउटसाइड। नहीं, but वो इंजर्ड भी था ना उस नहीं, वक्त। वो तो ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुआ है ना। हाँ। वर्ल्ड कप में ही Well, anyway, but I'm saying that we can use that mishandling to our advantage now, in that the world has not seen him. He will be a surprise. Even जो New Zealand team body, it's like their C team. Their main guys are not going to be there. So, you know, I think it's good that we have him as a surprise weapon in a way. और ये और पहली बात है कि हम लोग से सिर्फ ये 15 लिखे हैं, मगर ऑफ कोर्स जो बोर्ड की अप्रोच होगी या होनी भी चाहिए कि पूल 15 का नहीं होगा, अभी 25 का है, 25 का होगा। हाँ। क्योंकि हम लोग 5 नाम तो हम भी डाल सकते हैं इस पे। नहीं अब जिस तरह वो साउद है, साउद शकील हो गया या और भी नहीं, हैं इस तरह, हाँ, जिस तरह हारिस हो गया, गूगल मोहम्मद हारिस, इस तरह के प्लेयर्स हैं हु आर सॉर्ट ऑफ क्लोज इन दैट विसिनिटी के जिनका केस बहुत बन है सकता यार, है। बहुत वो अब्बास आफरीदी So, है, मोहम्मद अली, so वो मेरा सवाल है, I think if we're moving on from this, is Yeah. with the news today that the captaincy may be questioned and may be changed, who would you guys, if you were the chairman of the PCB, who would you make captain right now? Rizwan. I mean, out of the 4 candidates, we have Babar, we have Rizwan, we have Shadab, and we have Shaheen, right? I would, On मेरे ख्याल paper से जो तो आपने एविडेंस देखा है वो तो मेरे हिसाब से तो रिजवान ही बनता है। दी ओनली प्रॉब्लम देन इज आप दोनों तो उसको टीम में भी नहीं डाल रहे, तो वो थोड़ा सा इशू बन जाता है। तो मेरा ख्याल से तो लेट शाहीन को कंटिन्यू करें, ताकि वो ये पुराना, दे नीड टू ब्रेक द ओल्ड गैंग, या शादाब को भी कर सकते हैं ना। आई थिंक आई विल बी ओके टू शाहीन टू कंटिन्यू एट दिस टाइम, और रिजवान शुड रेस्ट, और ये दूसरे नए बच्चे खेले इंग्लैंड के। आई डोंट वांट टू सी एनी। बाबर को बेशक बाबर को भी बिठा दें, आई डोंट केयर। No. So yeah, maybe look, we've all been very critical of Shaheen as captain, but I do think he's had how many, 3 international matches, 5 international matches as captain, T20s. I think to change him abruptly like this sets a really bad precedent, and it could be the beginning of some bad feelings within the team. So even though I don't think he's the best captain, I think Rizwan is actually a better captain. I would keep Shaheen, because you have to have that continuity, and for the spirit of the team, you know, you need that. And I think he will learn. He has to learn. It's really unfair to make someone captain for just 5 matches and then take it. You know, मेरे ख्याल में। I don't know, आपने मोहसिन नकवी का भी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि नहीं? उसकी जो बातों से ये इशारा मिल रहा है कि probably they're going to change him. I mean, they said कि भी मैंने डिसाइड नहीं किया, ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो भी करेंगे वो हम एक लॉन्ग टर्म सोचेंगे, और हम उस बंदे को लगाएंगे या शाहीन को रिटेन करेंगे। एक सेकंड में अपनी लिस्ट देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कौन है इसमें? इसमें सिर्फ कोई भी नहीं है। So can I tell you, I think what I think will happen is they will make it Shadab, right? I think they will make it Shadab. I would like for it to be Shadab लॉन्ग टर्म, मगर आपको इतने कोई रिजर्वेशन है और लोगों को भी है, तो लॉन्ग टर्म तो आगा सलमान है, जो अभी उसने बेचारे ने कहीं कैप्टनसी नहीं की है, और या इमाद को बना देना, या फिर वापस बाबर के पास आ जाओ उस बेचारे के कैप्टन। Babar's playing so well without captaincy. I like that he's completely unencumbered. अभी उसकी इसकी अच्छी थी, उसकी जो है पेशावर की, उसने बुरी कैप्टनसी तो नहीं की उसने। क्या टीम वो बाबर का फॉलो वैसी बकवास कर रहे हैं लोग, उसकी बॉलिंग वीक थी, वो एंड में इसलिए बाहर हो गए। अगर बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होते उनके पास बॉलर, तो वो अच्छी टीम होती, वो बॉलिंग की से बाहर हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम हमें एक सब्सक्राइबर ने, हमारे एक फ्रेंड ने जो है शुएब आजम ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आपका शो हो तो प्लीज स्पेशली आसिफ से जरूर पूछेगा कि हाउ अबाउट फखर एट नंबर 4, जिसको बाय द वे मैंने डाला हुआ है, बिकॉज अभी फखर जो है वो हम ओपन करवाते रहे हैं, तो क्या इसके बारे में क्या राय है? मेरे ख्याल से तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं तो इवन लाहौर कलंदर के लिए कह रहा था कि यार व्हाई डू यू, इफ ही इज स्ट्रगलिंग इन द ओपनिंग स्लॉट, ब्रिंग हिम डाउन। तो I'm okay with that. So that was a very difficult request to research, and I couldn't. I tried my best through Stats Guru and everything to find out how he performs in the power play versus how he performs in overs 7 and beyond. And my computer skills are unfortunately not up to. What does your gut feel tell you? My gut feeling is that look, we have seen him finish off innings well. Also, I'm fine with him coming lower down. I don't mind that, because he's not just someone who lifts aerially. He's someone who finds gaps, and against spinners, we know he can be very aggressive. That match against New Zealand in the 50 over World Cup, we saw what he did, and middle overs with spinners be out there. So I'm okay with that. But again, I think so. Fakhr is so much of a confidence player. When he's confident, he's unstoppable. When he loses it a little bit, he's out for a long time.
And I don't know that we can afford to have a prolonged lean patch from him. So I think this New Zealand series is an ideal opportunity to see where he stands. But if he doesn't stand up, then for me, I put Rizwan in his spot. You know, मेरी अप्रोच डिफरेंट थी, तो मुझे कोई फखर पे डाउट है नहीं. मैंने इसलिए ये मेरी लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज मोर फॉर द न्यूजीलैंड टीम. So I just wanted to try some new combinations. The problem then is if these guys all succeed, then where do you put फखर का Fakhar? क्या In whose करोगे place do you No, put that's Fakhar in fine. your देखो, we all know what Fakhar can offer. कम से कम my mind is clear. तो I want to see can anyone. बट फखर को bring आपने एक more to the पॉजिटिव table. फ्रेम ऑफ माइंड में भी तो लाना है ना आपने. अब वो बात तो नहीं है कह क्या? सकते कि जी फेलियर 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 वर्ल्ड कप. वो डिपेंड करता है कि हाउ डू यू हैंडल योर प्लेयर्स. आइडियली तो ये होना चाहिए, आप रिजवान, बाबर, फखर तीनों को बुलाओ, आप वी आर ट्राइंग न्यू किड्स और तीनों को बिठा दो. मगर हम लोग इस तरह करते ही नहीं है. इंडिया पूरी Yeah, पूरी you know, क्यों नहीं करते लेकिन? Because if अजीब you lose बेवकूफ these लोग हैं. matches against a C team, then everyone is going to pile on top of that. फिर तो ठीक नहीं हो सकता कुछ भी यार. Our fan base has such a fragile psyche that they need to have victories to feel validated and say we're okay. I agree with you, but I'm telling you, if we lose against this New Zealand C team by trying new people, it's going to be a bloodbath, you know? Exactly. To quote someone else. तो ये चीज अच्छी की है, कम से कम इंडिया वाले फैंस भी ऐसे ही थे, बल्कि हमसे ज्यादा पैशनेट फैंस हैं इंडिया में इस वक्त भी. Somehow, याद नहीं है अभी वेस्ट इंडीज में हार्दिक पांड्या के लेके गया नई टीम, हार गया, बहुत बुरी तरह हारे, और इतनी बुरी टीम नहीं थी इंडिया की. तो पांड्या बोलता है कि ये कोई पता नहीं क्या बोला था उसने, ये तो मैं भूल गया, हार जीत तो होती है जो भी है. मगर इंडिया को फायदा हुआ है, तो हमें भी वही करना चाहिए. That's the mature approach. But you know, our fan base, it's the evidence is right in front of us. One guy for 6, everyone says कि यार उसको drop कर दो. अफगानिस्तान से हम सारे कह रहे थे कि यार एक्सपेरिमेंट करो. जब अफगानिस्तान से हार गए कि जी हम आज तक तो हारे नहीं थे अफगानिस्तान से, ये कैसे हो गया, हमारी इज्जत का सवाल, वो सारी चीज. चलो ये तो सबको पता है ना कि न्यूजीलैंड ना इंडिया है ना अफगानिस्तान है. न्यूजीलैंड से हारने का अफसोस किसी को नहीं होता यार. न्यूजीलैंड से हारेंगे भी नहीं यार. आपकी बीसी टीम को आप अपने होम कंडीशन में नहीं हरा सकते, तो फिर क्या है. एंड वी आर नॉट आस्किंग फॉर होल स्केल चेंजेस. इक्का दुक्का जो ग्रे एरियाज हैं ट्वीक करने की, उनको ट्राई कर सकते हैं. आप मुझे बता दो, do you guys really think बाबर, रिजवान और फखर, इन तीनों को खिला के you can test your young team? You cannot. They have to sit down, all three of them. If Rizwan is lower down, then I think so, yes. ये तीनों को बिठाओ, मैं तो कहता हूँ. तो then you gonna बाबर मैंने इसलिए छोड़ दिया था मैच प्रैक्टिस की भी बात होती है ना. We have to have some. कम मैचेस रह गए उनको, आपने वो भी तो देना है ना कि 6-7 मैचेस रह गए. हाँ भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ अब आयरलैंड वाले मैच के जाने के लिए. टिकटें भी ले ली हैं. Very good. Yeah. Mudassir, where I will agree with is Naseem Shah. He's just come off of injury. There is no reason that he should be playing in every one of these matches. Ek aad match mein khilao, then rest him because we know what he has. Same with Shaheen Afridi. Well, Shaheen Afridi is the captain, so that's an issue. But bowlers where the workload is there, especially fast bowlers, need to be rested. आमिर को आप जरूरी नहीं है सब में खिलाओ. आमिर की अगेन अब 31 का हो गया. आमिर को इनफैक्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी हो सकता है आप सारे मैचेस ना खिलाओ आमिर को. अमेरिका वाला मैच सबसे डाउन कर दो, आयरलैंड वाला मैच खिला लो. वो वाली चीज आपको देखनी पड़ेगी. Because you're going to be there. I'm going to be there and I want the best team. क्योंकि वो हो सकता है नॉकआउट हो जाए. सही है. चलें जी, आप होपफुली आपको हमारा पसंद आया होगा ये एपिसोड. तो इसके साथ ही I wanted to point out, remember I was saying that we have alhamdulillah, we are very blessed. We have many subscribers and each one of you are equally important to us. But I think one thing that has come to light is that Cricket Australia has been watching our podcast. And how do I know that? Because they just released this new technology called the Electra Stumps. I don't know if you have a picture of it. Simon's going to put it up here. Multicolored stumps that change color throughout the match. And if we see this, it's about to come. एक स्टंप तो आपके पीछे भी है ना. वही तो मैं कह रहा हूँ ना. This is what I'm saying is that we've had this here for what? How long? 1 year, 2 years, however long it's been. And they have now taken our idea, they've co-opted it, and they've now used it in the term of Electra Stump. So all I can say is I'm grateful that all of you in Australia are watching. I'm sure you are watching. And I am waiting for my check because I know that I certainly had a role in leading to the Electra Stump. So hopefully I will get compensated appropriately as well. हाँ जी, ये है जी. See here, Clark has got these stumps, and when you see it in real time, the colors are changing throughout, which is very reminiscent of what I've got here. And I've had this since the very first episode, and I know that they've been watching it. I know that they've incorporated it.
So you're welcome to the entire population of Australia. I tell you, you're welcome. And like I said, I'm waiting for my check. Hopefully it will come soon. Thank you. चलिए जी, और अगेन ये जो हमने आपके साथ लिस्ट शेयर की है, ये ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस है, सो इट्स नॉट लाइक रिटन इन स्टोन, एज सिलेक्टर्स ऑब्वियसली आर आल्सो काइंड ऑफ making up their mind, but these are sort of our early thoughts on this, so we thought we'll share it with you. Thank you so much. इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.